Okay. So today I have to discuss on carbanion. Carbocation already I discussed, that is carbocation, carbanion, carbene, nitrogen, benzene, they are intermediate. Okay, reaction intermediate. They are short living species, but they can be trapped. Okay, we can trap this during reaction. Okay, so and there must be so many proofs are there, that is they can exist. Okay, as I already said that in the previous lecture, that is phenol reagent and also dinon phenol reagent, there must be a proof is there, that is that reagent never be occur without forming carbocation intermediate. ओके अगर कोई कार्बोकेटा इंटरमीडिएट ना हो जाए तो तब पिनाकोल से पिनाकोलोन तो हो सकता है, पर वहाँ पर जो स्टेबलेस्ट जो रिएजमेंट होता है, जो मिथाइल का शिफ्ट होता है, हाइड्रोजन का शिफ्ट होता है या फिर फिनाइल का शिफ्ट होता है, वो नहीं होगा. ओके, सो दैट्स व्हाई देयर शुड बी कार्बोकेटन शुड बी मेड, otherwise there must be never be the reagent can be occur that like. ओके, बिकॉज आपका जो कार्बोकेटन है वो तो प्रोड्यूस हुआ, उसके लिए रिएजमेंट हुआ और स्टेबलेस कार्बोकेटन प्रोड्यूस हुआ, उसके बाद ही द अल्टीमेट प्रोडक्ट तैयार हुआ. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि कार्बोकेटन तो हुआ है, कार्बोकेटन एग्जिस्ट करता है. ठीक है. सिमिलरली इन SN1 रिएक्शन देयर मस्ट बी द लिविंग ग्रुप कैन बी लिव according to their living tendency, and then there should be carbocation can be produced, and due to this carbocation there must be the nucleophile can attack above and below the plane, so there must be high chance to get racemic mixture. That means R and S both enantiomer almost equal excess. Okay, so this is the another proof, that is carbocation can be exist. Now the question arises, how we conclude that carbanion can be exist? Carbanion that also be exist, because you know sometimes base catalyze aldol reaction, there must be the base abstract the proton, acidic proton, and then carbanion can be produced, and this carbanion can be react. Okay, not only that, there must be enolate is also there. There must be enolate can be there, that is where base abstract the proton, and there must be the carbanion can be produced, and that can be combined with another double bond, and by this way there must be reaction can be happen. Okay, not only that, there must be decarboxylation is there. After decarboxylation, after carbon dioxide removal, there should be carbanion can be produced. If the carbanion is not stable at all, so there never be carbon dioxide release, never be decarboxylation can be take place. So before performing decarboxylation, you have to check out after decarboxylation the carbanion will be stable or not. Okay, this is always remember that. Maybe there must be the conditions are will be provided like same, that is heat will be provided, carbon dioxide will be eliminated, but the after the carbon dioxide elimination, if the carbanion never be stable, never be get stabilized, so there never be decarboxylation can be take place. Okay, remember that. Okay, I already tell this in very years ago already. Okay, most of the books skip this. Most of the book there must be this point never be written as like, but remember that before decarboxylation you have to check out the carbanion which should be made after decarboxylation, that should be stable or not. If not stable, decarboxylation never be happen. Okay, रिमेंबर दैट. अगर आपका डिकार्बोक्सिलेशन करना है तो पहले आपको ये देखना है कि डिकार्बोक्सिलेशन के बाद जो कार्बनाइन होगा उस कार्बनाइन स्टेबल है या नहीं है. अगर नहीं है तो डिकार्बोक्सिलेशन का कोई चांस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगा. रिमेंबर दैट. ओके, not only that, there must be active methylene group is there. Active methylene, you know, active methylene, this CH2 is very much acidic, so there must be a high chance to produce carbanion, and this carbanion can be react in any attacking place. Okay, maybe double bond, maybe other side, maybe Michael addition, maybe aldol condensation, maybe Parkin condensation. So many condensation can be happen based upon carbanion stability, carbanion production. Okay, so obviously carbanion can be cap and that can be exist, and this is a one type of intermediate. This is not a reactant,
that should be react. This is not a product, that is not an ultimate goal. This is a middle compound, this is an intermediate. Okay, remember that. So carbanion are the anions. Basically, if you want to know, that is the definition in terms of charge. So carbocation is a positively charged and carbanion is a negatively charged. ओके, कार्बोनाइन नेगेटिवली चार्ज होता है, उसको हम एनाइन भी बोल सकते हैं. कार्बन के ऊपर एक एनाइन, उसको हम बोलते हैं कार्बोनाइन, लाइक दैट. Carbon having one bond, 3 bond, and along with one negative charge, that is called carbanion. Okay, and also there must be carbon atom that should be carries 3 bond, okay, along with one negative charge, and making carbon atom negatively charged, that is called carbanion. Nothing but. Okay, so you see there must be so many example I already made. Okay, and their naming also there, like CSC negative, that is methyl anion, you can say also you can say simply carbanion. CH2 negative CSC, that can be said as ethyl anion, or also you can say methyl carbanion. When you used carbanion, there must be, you have to omit one carbon, and then by omitting this carbon you have to give a name. When you have to say that is a carbanion, so already you consider this CH2 negative, so you never put the name ethyl, you have to put the name methyl, which will be rest. Okay, but if you directly use anion, so on that case you have to name the full name, that is ethyl. You have to consider both the carbon. Okay, remember हम फिर से बोल रहे हैं, क्या है आपका जो इथाइल एनायन है, जब आप एनायन लिखोगे तब होल 2 कार्बन ही आपको चूज करना होगा, और 2 कार्बन के लिए क्या होता है, इथाइल होता है, तो इथाइल एनायन होगा. पर जब आप कार्बनायन एक बोलोगे तो कार्बनायन एक CH2 नेगेटिव को सजेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो पहले से कंसिडर हो गया. तो हम दूसरा जो CH3 है उसको हम कंसिडर करेंगे, और दूसरा CH3 क्या होगा, मिथाइल होगा, तो मिथाइल कार्बनायन होगा नेमिंग. Okay, methyl carbanion. Similarly, there must be CH2 negative already considered as a carbanion, so that's why we have to consider this methyl and this methyl, that is dimethyl carbanion. Okay, but when you have to consider anion, there must be, you never consider any carbon, so that's why the whole unit is called as isopropyl, so that's why it is called as isopropyl anion. Okay. Similarly, there must be one CH3 negative when you consider as a carbanion. There must be, you have to use, that is ethyl and also methyl and then carbanion. Obviously, E come first then M, because of you have to follow alphabetical order. आप जब भी UPSC nomenclature करोगे, आप याद रखना alphabetical order first maintain होगा, ठीक है. और जब आप एनायन बोले तो तब आपको होल यूनिट कंसिडर करना पड़ेगा. होल यूनिट क्या होता है, सेक ब्यूटाइल होता है, तो सेक ब्यूटाइल एनायन होगा, ठीक है. दिस इज ऑल्सो साइक्लोपेंटाइल एनायन. ओके, दिस इज बेंजाइल एनायन, बिकॉज बेंजाइल पोजिशन, बेंजीन रिंग की इस पोजिशन में जब CH2 रहता है उसको हम बोलते हैं बेंजाइल पोजिशन, ठीक है. तो बेंजाइल एनायन भी बोल सकते हो, या फिर आप इसको फिनाइल कार्बनायन भी बोल सकते हो. जब आप सोचो like that, बेंजीन यहाँ पर एक CH2 नेगेटिव है. जब आप CH2 नेगेटिव को ऐसे कार्बनायन बोलोगे, तब जो रेस्ट पार्ट होगा, तब वो रेस्ट पार्ट को हम क्या बोलते हैं, फिनाइल बोलते हैं, राइट. जब आप CH2 नेगेटिव को कंसिडर किया एज ए कार्बनायन, सो द रेस्ट पार्ट विल बी फिनाइल, सो दैट्स व्हाई द नेमिंग इज फिनाइल कार्बनायन. फिनाइल कार्बनायन. Okay, phenyl carbanion. But when you have to consider as an anion, so there must be, you have to consider whole over the unit, that is benzyl anion, because when benzene ring and there must be CH2 is present, this unit is called as benzyl. Okay, clear. When anion is given, there must be whole unit name should be, you have to provide. But when carbanion is there, so that means the carbon which having negative charge already considered.
ओके, जो कार्बन के मस्तक में एक नेगेटिव चार्ज है, बेन में एक नेगेटिव चार्ज है, वो ऑलरेडी कंसिडर्ड है। सो रेस्ट पार्ट को आप कंसिडर करना पड़ेगा जब कार्बन आयन होगा, और जब एनायन होगा तो होल पार्ट को ही कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, क्लियर? Okay, now how it can be produced? So first one, by the abstraction of an atom. Suppose there must be anyhow this when homolytically cleave. So there must be homolytically cleave. So there must be X positive R negative can be produced. That can be happen like CH3X. X when eliminate, so there must CH3 positive is produced. Similarly, when decarboxylation can be take place, CO2 eliminate, there must be carbon ion can be produced. Okay. So generally protons can be abstracted, then carbon ion can be produced. So the proton can be abstracted by the bases like OH minus, hydroxyl ion minus, ETO minus and PGT negative. Okay. So when ETO minus, that should be abstract this proton, there must be carbon ion, this carbon ion can be produced. Okay. When this base abstract this proton, so there must be the carbon ion again produced. This is cyclopentyl carbon ion. Okay, clear. Next one, decomposition, like carbon dioxide elimination. There must be carbon dioxide can be eliminated, like this oxygen negative charge can be delocalized. So by this way, R negative and also CO2 can be eliminated, and the reaction can be favorable because when any gas when eliminated, there must be randomness or entropy. जो entropy और randomness होता है वो पॉजिटिव होता है और बहुत पॉजिटिव होता है। तो आपका डेल एस क्या होगा, ज़्यादा पॉजिटिव होने के लिए आपका क्या होगा, डेल जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने का चांस होता है। तो स्पॉन्टेनियस होता है रिएक्शन, ठीक है। तो ये ड्राइविंग फोर्स होता है। Next one, by the addition of anions. So suppose F minus, this is anion. This anion react on this carbon. So there must be the double bond can be break in that way. So there must be carbon ion and also the fluorine can be attached. By this way carbon ion can be generated. कोई भी बाहर का कोई भी न्यूक्लियोफाइल आकर जब अटैक करेगा तब डबल बॉन्ड तो कोई भी जगह में माइग्रेट करेगा। माइग्रेट कैसे करेगा, कोई भी नेगेटिव चार्ज की तरह रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पर एक जगह में एक दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया, दूसरा जगह में कार्बन आयन प्रोड्यूस हो गया, राइट। ओके, नेक्स्ट वन, रिएजमेंट। ऑलरेडी देयर मस्ट बी कार्बन आयन इज देयर, बट देयर मस्ट बी फिनाइलिन हैविंग द हाई माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, सो दैट्स वाई यहाँ पर एक कार्बन आयन प्रोड्यूस हो गया, पर ऑलरेडी कार्बन आयन था, पर रिएजमेंट हुआ, ठीक है। नाउ कार्बन आयन कैन बी बिहेव एज लीविस बेस। लीविस बेस क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, लाइक एमोनिया, लाइक वाटर, लाइक अदर थिंग, ओके। और लीविस एसिड किसको बोला जाता है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इलेक्ट्रॉन लोन पेयर या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पर लीविस बेस बोला, नाइट्रो कार्बन के माथा में, कार्बन के बेन में एक नेगेटिव चार्ज है, एंड व्हिच कैन बी हाईली डोनेटेबल टेंडेंसी शुड बी देयर। ओके, कार्बन क्या करेगा, उसका खुद का नेगेटिव चार्ज देने का कोशिश करेगा। सो कार्बन नेगेटिव चार्ज, दैट मीन्स कार्बन आयन बिहेव लाइक लीविस बेस, नॉट लीविस एसिड, बिहेव एज लीविस बेस। आपका कोई भी एमोनिया बोलो, वाटर बोलो, जो लोन पेयर डोनेट कर रहा है, यहाँ पर कार्बन आयन नेगेटिव चार्ज को डोनेट कर रहा है। तो दैट मीन्स ऑलमोस्ट सिमिलर, दैट इज they behave as Lewis base, and here this carbon ion also behave as Lewis base. Along with short-lived species, already I said that carbon ion is an intermediate. So obviously this intermediate having not such stability to live a long time. That should be short-lived species. But yes, due to this stability factor, there must be the existence can be vary. अगर कोई भी इंटरमीडिएट बोलो, वो अगर स्टेबल हो, इंटरनली स्टेबल हो, तो बहुत ज़्यादा टाइम रहता है। और कोई भी कार्बन आयन, अगर कार्बन आयन बोलो, कार्बोकैटायन बोलो, कोई भी रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलो, उसका अगर इंटरनल स्टेबिलिटी कम होता है तो वो ज़्यादा तक नहीं रहता है। तो आप जो भी रिएजमेंट देखते हो, इतना सारा रिएजमेंट होता है, लाइक पिनाकॉल रिएजमेंट जो कार्बोकैटायन का होता है, कार्बोकैटायन का डायनोन फिनोल रिएजमेंट होता है, और भी मिथाइल शिफ्ट, हाइड्रोजन शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट होता है। ऐसे कि कार्बन आयन में भी बहुत सारा रिएजमेंट होता है।
अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी फैक्टर कौन सा कार्बोनाइन स्टेबल होगा। तो अल्टीमेटली क्या गोल होता है, स्टेबलेस्ट कार्बोकैटायन या फिर स्टेबलेस्ट कार्बोनाइन प्रोड्यूस होता है। पर यहाँ पर एक ट्विस्ट है, क्या है, जो रिएचमेंट होता है वो रिएचमेंट के लिए तो कुछ तो टाइम लगेगा ना। When the rearrangement can be occurred, there should be some time needed, right? Some time needed. How this time should be provided? There should be sudden existence of that carbocation or carbanion should be there. That's why there enough time can be get due for rearrangement. Okay, otherwise rearrangement never be happen. ओके, कार्बोकैटायन हो या कार्बोनाइन हो, वो कुछ टाइम तक एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए ही रिएचमेंट हो रहा है, रिएचमेंट होने का टाइम मिल रहा है। अगर वो उतना तक टाइम अगर ना रहे तो रिएचमेंट नहीं होगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, तो वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। कोई भी कार्बोकैटायन हो या कार्बोनाइन हो या फिर कोई भी रिएक्शन इंटरमीडिएट हो, वो कितना टाइम तक आइसोलेटेड रहता है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन होने के पहले कितना टाइम तक रहता है। अगर ज़्यादा टाइम तक रहे तभी रिएरेंजमेंट होने का एक पॉसिबिलिटी होता है, क्योंकि रिएरेंजमेंट होने का भी तो कुछ टाइम लगेगा ना, अदरवाइज रिएक्शन में डायरेक्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात होता है जो शॉर्ट लिविंग स्पेसिस होता है, पर उसका स्टेबिलिटी, इंटरनल स्टेबिलिटी या फिर कोई भी और कुछ फैक्टर के लिए वो कोई इंटरमीडिएट ज़्यादातर रहता है, कोई इंटरमीडिएट कम तक रहता है, और डिपेंड ऑन इट देयर शुड बी द डिफाइंड प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड। और ऑलवेज रिमेंबर, जो भी इंटरमीडिएट हो वो अगर कुछ टाइम तक रहे तो वो उसका एक हाई टेंडेंसी होता है किसी भी तरह के एक स्टेबल इंटरमीडिएट प्रोड्यूस करे। ठीक है, तो वो स्टेबिलिटी गेन करने का लक्ष्य लेकर ही वहाँ पर रिएरेंजमेंट होता है। कोई भी ऐसे वैसे रिएरेंजमेंट नहीं होता है। रिएरेंजमेंट ऐसा नहीं होता है कि आपका कोई भी रिएरेंजमेंट हो जाए, नो, कोई भी एप्टीट्यूड किसी का ज़्यादा किसी का कम होकर रिएरेंजमेंट हो जाए, ऐसा भी नहीं होता है। वहाँ पर एक गोल होता है कि जो भी कार्बोकैटायन हो गया या फिर कार्बोनाइन होगा वो स्टेबल होगा आफ्टर रिएरेंजमेंट। ठीक है, तभी रिएरेंजमेंट होगा। ठीक है, और अब अगर रिएरेंजमेंट हो जाए तो तब हमको देखना पड़ेगा कौन सा ग्रुप ज़्यादा माइग्रेट करने का टेंडेंसी शो करता है। जैसे माइग्रेशन का आप अगर बोलो तो ज़्यादा माइग्रेशन कौन सा ग्रुप करता है, बोलो। हाइड्रोजन ज़्यादा करता है, उसके बाद फिनाइल करता है, उसके बाद कोई भी 3 डिग्री एल्काइल, देन 2 डिग्री एल्काइल एंड देन 1 डिग्री एल्काइल माइग्रेशन करता है। ठीक है, तो फर्स्ट हाइड्रोजन हो तो हाइड्रोजन माइग्रेशन करेगा, उसके बाद फिनाइल, उसके बाद 3 डिग्री एल्काइल, 2 डिग्री एल्काइल, 1 डिग्री एल्काइल माइग्रेशन होता है। ये माइग्रेशन का एप्टीट्यूड होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, सम रिएक्शन भी होता है। कार्बोनाइन का कुछ रिएक्शन होता है, जैसे वो कोई भी पॉजिटिव साइड को अटैक करता है। अगर कोई भी हैलाइड ग्रुप हो तो हैलाइड ग्रुप डेल नेगेटिव होता है और CH डेल पॉजिटिव होता है। तो कार्बोनाइन इलेक्ट्रॉनिकली डेंस होता है और वो नेगेटिवली चार्ज होता है। वो किसको अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सिस्टम को अटैक करेगा। दैट मीन्स कोई भी पॉजिटिव चार्ज को अटैक करेगा और I- बाहर आ जाएगा। तो दिस प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड and along with I- can be generated. Okay, next one, carbanion addition to multiple bond. This carbanion, that is, there must be R negative. R negative can be methyl negative, can be ethyl negative, can be other group can be there. So that should be the example of carbanion. Okay, so that should be react on this carbonyl and there must be this type of compound can be produced. When it can be react with water, there must be alcohol can be generated, that is RCH CH3OH प्रोड्यूस होता है। ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर, बाय रिएक्शन विथ वाटर। ओके, नेक्स्ट वन, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। CH3 नेगेटिव हाइड्रोजन का एलिमिनेट किया,
फ्लोरीन बाहर आ गया तो एल्किन प्रोड्यूस हुआ। ओके, लास्ट वन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी देखो, स्टेबिलिटी क्या होता है? फर्स्ट वन, देयर मस्ट बी, दिस इज द रिवर्स ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटन। कार्बोकैटन में हमने क्या देखा? 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, राइट। पर यहाँ पर क्या होगा? 1 डिग्री का सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पर 1 डिग्री भी नहीं स्टेबल होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब मिथाइल कार्बोनाइन, जिसके साथ कोई भी कार्बन नहीं है। 0 डिग्री मतलब दैट मीन्स द कार्बन which never be attached with any carbon, that is called 0 degree, like methyl unit, okay, which is attached with all the hydrogen, not a single carbon. Okay, this is called 0 degree carbon. Then 1 degree carbon, that means one carbon should be attached with that particular carbon, that is called 1 degree carbon. 2 degree carbon, that means this particular carbon can be attached with 2 other carbon atom. Okay, and 3 degree 3 degree carbon, that means the carbon that should be attached with other 3 carbon atom. And quaternary, that means the carbon, the particular carbon that should be attached with 4 carbon atom. Okay, so by this way the naming can be there. And always remember, for the carbocation, there must be 3 degree, that is more stable than 2 degree, and 2 degree more stable than 1 degree, 1 degree more stable than 0 degree. Okay, but carbanion follow the reverse order. There should be the 0 degree is more stable than 1 degree, 1 degree more stable than 2 degree, and 2 degree more stable than 3 degree. Carbanion, that means the stability is reverse order of carbocation. That is 0 degree more stable than 1 degree, 1 degree more stable than 2 degree, and 2 degree more stable than 3 degree. Okay, and always remember their stability, that is first aromaticity stable the carbanion, then I think minus m or plus m, that is depend on the substance, and then minus h I think, and then minus I, that should be stable the carbanion. Okay, and always remember carbanion mostly are sp3 hybridized, and that's why they mostly show the inversion of rotation. Okay, umbrella type inversion, that is carbanion, suppose this where is like that, this carbanion methyl like structure, methyl ammonia like structure, negative, that can be inversion can be there. So optically inactive. Okay, this type of inversion can be there. And next one, only sp2 carbanion possible when their conjugation is there, that is this normally sp3, but the below side there must be C, that is this carbanion can be participate in conjugation, and due to this conjugation that can be assumed as a sp2 hybridization. Okay, like allyl carbanion, this is also follow the sp2 hybridization. Why? Because there must be extend conjugation is there, and due to this conjugation sp3 convert into sp2. Okay, so by this way all the carbanion I already discussed about this, and next day I will discuss on carbene, and then again continuously 19 and benzene, then I will discuss on sigma complex, pi complex, then I have to go on stereospecificity, asymmetric reactions, diastereoselectivity, non-stereoselectivity, this type of terms, because this is are very important in point of view all the exam like B.Sc, M.Sc and PGT chemistry, CSIRNET, GATE, WBSET along with BARC also. And already I discussed so many things, that is reaction intermediate and GOC and aromaticity. I will make some PYQ, and that should be I will solve on it. Okay, so please watch the videos, and regularly I will discuss all the topics, and I will clear out all the questions solved. Okay, so thank you up to this.